Hello, it's me. Hey guys, welcome back to another episode of the Funny Podcast. This episode once again is with the support of the Podcast Lab of India Film Project and anchored by Spotify. So we've been doing a weekly episode every day, and I first of all want to thank everyone who's been constantly listening to it. Despite of the hiatus, the numbers are still the same as it was before I went on to the hiatus. So thank you first of all very much for actually sparing some time, sparing 20 minutes of your time and listening to what I have to rant about. Secondly, this story, again, it's a very fresh story. I usually take stories which are from the past, and when I say past, a couple of years back, but this one happened very recently, a while ago. So this story in general is about uh, something that I wasn't expecting. In the previous episode, I had spoken of how uh, I anticipate everything, I plan everything, I make sure that everything that I'm going to do is strategized. So, yes, that is how I like my life, to know what exactly is going to come next moment. But this again, something that happened recently. It happened out of the blue. And I don't know why, I don't know how, and that is why I thought I should share about it because it took me 2 days to recover from it, but yes, it was pretty hilarious by the end of it. So let's just move back into a couple of days back. Uh, yeah, let's just move back in time and relive the moments. So this happened a couple of days ago, and I was probably having my morning coffee, and somehow, I mean, I did not check my message at night. This particular message came to me at somewhat around 2:30, 2:45. Let's check. Yeah, 2:45 in the morning. So obviously I was sleeping and I did not anticipate this. So when I woke up, I made myself some coffee. Then I opened my phone to see exactly what exactly are the notifications that I have. So there was this message on WhatsApp from an unknown number, and the next moment what I see is there's a voice note. Now usually I'm not a person who likes voice notes. I have told this to people that I've dated also that if you are gonna send me voice note, I'm gonna break up. I don't have that much patience to listen to someone that much through a phone. सामने आके जो बोलना है बोल लो बट ऐसे नहीं. So I got a voice note and it's an unknown number, so I thought it would be one of those KBC scams, and I really enjoy those because then I text them back that हाँ बताइए कैसे मुझे पैसे मिलेगा ये वो, and it's really fun to actually go through with it. तो केबीसी वाला सोच के मैंने सोचा कि चलो सुन लेते हैं, तो मैंने प्ले किया and the first thing that I hear was हराम खोर. लाइक ये स्कैमर्स की भी थोड़ी सी पोलाइटनेस कम हो गई है. हरामखोर को नहीं बोलते थे पहले. एंड दिस वाज अ गर्ल. शी started with हरामखोर and there was a pause, and just to remind you, this voice note was sent to me at what, 3 a.m. in the morning. So I thought it might have been a drunk dial by someone else. So I kept on playing it. सुन रहा हूँ हरामखोर. There's a pause, then it starts off like तू ऐसा कैसे कर सकता है उसके साथ, you don't know what she's going through, uh, how can you be so heartless, how can you be so insensitive. पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें आ गई और मैं सोच तो पड़ गया कि यार ये रात के 3 बजे मुझे ये किसने भेजा, बिकॉज इट्स नो नंबर. और मैंने ट्रू कॉलर से भी वो खसका दिया था नोटिफिकेशन. तो आई वॉज लिसनिंग टू इट. आई वेगली रिमेम्बर्ड द वॉइस. तो kept on hearing कि तू कैसे कर सकता है उसके साथ, यू डोंट नो हाउ हार्ड दिस ब्रेकअप हैज बीन ऑन हर, ये वो. तो मुझे लगा यार ये किसी और का भी हो सकता है बिकॉज आई हैव बीन सिंगल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ऐसे कोई मेरे को क्यों भेजेगा. तो I mean, भेज सकते हो. इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट गोना मेक अ पॉडकास्ट आउट ऑफ इट, बट अचानक से आ जाता है. तो मुझे बोला गया कि ऐसा है, तू ऐसा है वैसा है.
You should see her, you should have seen her yesterday, she was crying like hell, ये वो फलाना ढिमाका, एंड kept on going। मैं सोच रहा हूँ यार, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ आता है, एक अननोन नंबर से आपको मैसेज आता है, और आप वो मैसेज पढ़ते हो, या फिर वो मैसेज इन दिस केस सुनते हो, तो कुछ ख्याल आने चाहिए आपके दिमाग में, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। मेरे दिमाग में भी दो ख्याल आए थे। That is the reason why it took me 2 days to actually recover from the entire thing कि हाँ unanticipated, unwarranted messages आ रहे मेरे को। So it was all of a sudden, it was the first thought that came up was that ये है कौन? क्योंकि I mean I had no idea ये है कौन, ये कर मतलब मेरे को क्यों बोल रही है। I haven't spoken to a girl I've dated in like so long। तो कहाँ से आ रहा है ये सब, इतना भर भर के नफरत कहाँ से आ रहा है? और हो भी रहा होगा तो रो रही है, ये है वो है, तो भाई इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ अलग चल रही है अब। और वो जो भी है, जिसका भी ये अनवारंटेड एंगर मेरे पे आ रहा है, उसकी लाइफ भी अलग चल रही है। सो फर्स्ट थॉट वो कि ये है कौन। क्योंकि कोई भी हो, अगर आपको कोई मारने की भी धमकी देता है ना, तो वो एक बार बोलता है कि हेलो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये तो भाई एक सिंपल सी गाली गलौज करने के लिए भी कम से कम अपना इंट्रो तो दो कि हाय दिस इज दिस साइड, यू नो व्हाट, जस्ट फक ऑफ। ये बोलते मैं समझ लेता कि हाँ तुम ये हो, तुम इसकी फ्रेंड हो, इसलिए तुम मुझे गाली दे रहे हो। बट ये हुआ ही नहीं। आई नेवर गॉट दैट। स्ट्रेट अवे हरामखोर से शुरू किया और फिर गाली दिए जा रही है। 3 मिनट के आसपास का वो वॉइस नोट था, जिसमें कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, जैसे पता नहीं एंड सेम का आंसर शीट हो। सेम आंसर को बार बार लिखे जा रहे ताकि पन्ने भर जाए। तो वो चलते क्या 3 मिनट हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये है कौन, क्या हो रहा है। मैं सुन रहा हूँ, मैंने 2 बार सुना एक्चुअली, क्योंकि मेरी कॉफी खत्म नहीं हुई थी, तो आई वाज स्टिल गिविंग सम भाव टू द फर्स्ट नोट। बाय द सेकंड वॉइस नोट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये वॉइस किसकी है। वॉइस मुझे समझ में आ भी नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये जो कॉन्टेक्स्ट दे रही है मेरे को कि हाँ ये रो रही थी, इससे कितना हार्ड हुआ है ये सब, टफ टाइम, ये वो फलाना दिमागा, तो मैं सोच रहा था कि है कौन, हु इज दिस पर्सन जिसको मैंने इतना दुख दिया। ये मेरा सेकंड थॉट था कि शायद वहां से मेरे को पता चल जाए क्या हो रहा है। एंड बहुत देर तक सुनने के बाद मैंने समझा कि हाँ चलो उसकी बात हो रही है, सम एक्स जिससे मैं 4 साल से 5 साल से मिला भी नहीं हूँ। अब 5 साल से मैं किसी से मिला नहीं हूँ, 5 साल बाद भी अगर वो रो रही है, तो या तो वो मुझे खुद बोलती कि आई स्टिल नॉट मूव्ड ऑन, मे बी आई वुड हैव यू नो स्पोकन टू हर, या तो वो खुद मूव ऑन कर लेती, किसी और को डेट करती, कुछ और होता। बट ये क्या तरीका है कि तुम मुझे गाली दे रहे हो, वो भी बिना किसी नोटिस पीरियड के। अगर मुझे कहीं से ऐसे पैसिव अग्रेसिव इंस्टाग्राम स्टोरीज दिखते कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, माई लाइफ इज सो लोनली, तो फिर मैं मानता हूँ, क्योंकि ये चीज मैं भी कर सकता हूँ। आई जनरली मेक जोक्स अबाउट द सिंगलहुड। बट जब तुम कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो एड्रेस करो कि हाँ तुम कौन हो और तुम क्यों ये बोल रहे हो। ऐसे आउट ऑफ द ब्लू यू जस्ट स्टार्ट येलिंग कि हाँ उसको रातों को नींद नहीं आ रही, उसका दिन का चैन चला गया है। मैं क्या समझूंगा भाई, तुम 90s में डेविड धवन की मूवी की तरह बात कर रहे हो, तो फिर मैं कैसे समझूं कि हाँ कौन है क्या है। इट केप्ट ऑन गोइंग दैट वे। और जब वो मुझे समझ में आया कि ओके दिस इज दिस पर्सन, और दिस पर्सन हैज बीन सेंडिंग मी these messages on behalf of one of my exes, तो मैं सोचा कि रिप्लाई करूं। एट वन पॉइंट आई वाज लाइक हाँ रिप्लाई कर ही देते हैं यार, इट्स ओनली ह्यूमेन। तो मैंने रियलाइज किया कि ये रात के 3 बजे भी जो भेजा गया ना, इसके पीछे भी एक कहानी है कि अ, अगर ये गलती से भेजा होता, अगर ये ड्रंक डायल होता, क्योंकि मैं ये मैसेज देख रहा था सुबह के 10:30 11 बजे के आसपास।
तो अगर ये गलती से हुआ होता तो फिर मैसेज डिलीट किया जा सकता है, विच मेंट कि ये किसी ने दुख में इम्पल्सिव होके नहीं, दिस वाज अ स्ट्रेटेजाइज्ड मूव। उन्होंने रात में देखा कि बादल है, एडवांटेज ले सकते हैं, एंड दे सेंट मी दिस वॉइस नोट। प्रॉबेबली मल्टीपल टेक्स के साथ भी लिया होगा। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि अगर मैं रिप्लाई करता हूँ तो मुझे और गालियां पड़ेंगी, बिकॉज दे थिंक दैट आई विल बी गिल्टी। तो मैं तो यही सोच के चले जा रहा हूँ ना कि मैं अगर कुछ भी टाइप करूँ, और मैं जब टाइप करने लगा, द पर्सन somehow automatically came online. When they came online, I realized कि हाँ, they were waiting for me कि हाँ, सुबह के टाइम पे ये जब उठ के मैसेज पढ़ेगा, रिप्लाई करेगा, आई एम सॉरी लिखेगा, या फिर कुछ और करेगा, तब वो जवाब देंगे। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, इधर मैं अगर कुछ बोलूंगा तो फिर आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि हाँ, अब जो भी मैं लिखूंगा, इट शुड बी अ सिग्नल, अ साइन, अ डिमार्केशन कि हाँ, आई नो व्हाई यू डिड दिस, एंड यू आर गोना अंडरस्टैंड कि हाँ, मुझे पता है तुमने जानबूझ के ये किया है, ये एक्सीडेंटल ड्रंक वॉइस टेक्सटिंग नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि नाउ आई विल टेक माई एंटायर टाइम टू कम अप विथ समथिंग विच विल बी ब्यूटिफुल, टचिंग, लोग इसके बारे में सुनेंगे तो वो उनकी आंखों से आंसू आ जाए। दैट इज व्हाट आई एम गोना डू नाउ, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय गेम। नॉट, आई shouldn't call it a game, but yeah, that is what I did. So that moment, I started off by typing. This person was online, which means कि उनके में भी अगर चलो 8 घंटे भी हुए, इतने मैसेजेस नहीं आए होंगे कि मेरा कॉन्टैक्ट नीचे चला गया होगा, तो वो ऊपर ही था, तो अगर वो नोटिस पे आना होता वो आ जाएगा। तो आई स्टार्टेड टाइपिंग, एंड दिस पर्सन वाज कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन, कहीं पे भी एक सेकंड के लिए भी उनका वो ऑनलाइन गया नहीं, गायब। समहाउ आई रियलाइज कि हाँ, ये कोई तो है जिसको मैं जानता हूँ, मेरी वजह से जिसको 5 साल से नहीं मिला, बट उसकी कोई फ्रेंड किट को आया ही है। तो इट केप्ट ऑन, आई केप्ट ऑन टाइपिंग, टाइप करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, एंड आई वाज राइटिंग अ वेरी हार्टफुल मैसेज कि हाँ, तुम्हें मैं जताऊंगा भी कि हाँ, आई एम सॉरी। So I started writing an apology. I kept on typing it, and she was already online. तो वो काफी देर तक ऑनलाइन थी, एंड while I was typing, I was again कुछ कुछ गलती हो जाती है तो बैकस्पेस भी किया वगैरह करते 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 काफी देर तक मैं टाइप किया, और मैंने बहुत ही लंबा मैसेज लिखा, इतना लंबा कि व्हाट्सएप पे भी एक ऑप्शन होता है जिसमें आता है रीड मोर, तब जाके बाकी का मैसेज दिखता है। तो इतना लंबा लिख रहा था, और मैंने सब कुछ लिखा कि हाउ थिंग्स वर डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो इन द बिगिनिंग, हाउ the person was not the right fit for me. There were some inconsistencies, how I had certain other goals that I wanted to accomplish, and knowingly or unknowingly, he was somehow uh, becoming a hindrance. So I had given that clarity 5 years ago also. I've given the same clarity now also. I wrote down that yes, if still she's hurt, I do take the responsibility. I am apologizing for the same, because I don't want her, or I don't want anyone to be upset because of me in this situation. Because at the end of the day, when you talk to someone and they say that the other person, some mutual friend you're talking to, and they're saying that, I met that person and they are still heartbroken, they're still thinking about you, it makes you wonder if you did the right job or not by breaking up. It's a very basic thing that will come up. It will pop up again and again in your mind. So I realized that, and I started typing about it. I was actually pouring down all my heart.
And all this while the other person is still online. So I was wondering that, they're waiting for a reply. Now I also knew कि ये सब उन्होंने जानबूझ के किया है, हर चीज उन्होंने मतलब सोच समझ के मुझे भेजा है। और कभी डिलीट नहीं किया उन्होंने मैसेज, मतलब कि दे वांटेड मी टू हियर इट। सो देयर वाज दैट काइंड ऑफ एन angst also कि you could just be upfront about these things, but the way you are trying to work upon it, it's not acceptable. I could have straight away said that, but no, I know that maybe if अगर 1% भी वो इंसान में एक्चुअली दुख है for what happened 5 years ago, अगर इस उस पूरे वॉइस नोट में 1 मिनट की भी सच्चाई हो, तो फिर it would have been very wrong on my end to actually assume certain things and just start accusing. So I understood that yes, no, I am going to talk to them in a very polite manner. I'm going to open my heart just the way they did. They also can't see because this was a friend of the person I dumped. So it was obvious that yes, if the friend is upset, that is why the girl herself is upset. That is why the friend is also upset. And I agreed. There's absolutely no reason why the person should not be upset. So I kept on writing it and I told them that, if it helps, I can actually talk to her again. I can, probably help her move on. I can help her with getting some closure. I wrote all of that because I thought at that point it was very important for me to address this entire thing. So after typing for around 10 to 15 minutes, I realized that yes, this is the right message. This is the humane way of approaching the situation. This is how I should react. It was a very long message. I read it once again. I read everything, and this person, after typing, the person was still online. After typing, I made some edits, which was clearly being seen by them as an edit. They see that yes, I'm still typing. So they are also expecting the same message. But someone has been typing for 15 minutes to send a reply to a 3-minute voice note. So I realized that yes, this is a heartfelt message, and they would probably understand. They would see that yes, I have guilt, I have remorse for what happened back then. And that's when I selected the entire text, deleted it, and then sent them not saved. Who is this? Yep, that is what I said. That is what I meant. And I sent it, they read it, and probably got blocked because they never replied to this. So that was it. I mean, the reason why I'm sharing this story is because this has happened by the same person before also, the same person now also. So I don't like it when such things happen. Uh, there was an attempt of giving closure to people. So yes, I tried my best that the person understands why I'm, separating. But when you don't and you try to play these manipulative games, you should understand one thing, that if the person does not understand your game, they are probably gonna get very hurt. And if they do, then you are the one in the bad shade. It does not bother them that much. You need to understand this. And this is, again, I say that whatever I'm going to share in this is going to be bizarre, and I personally find it very bizarre. If you also think that someone has ever sent you a voice note like this or a text like this, where they're anticipating a certain type of reply, then you might be able to relate to it, and probably it's for the best that yes, we acknowledge this. So that will be all from my side. If you have been through a similar situation, you can hit me up, tell me what exactly was your situation, and probably I'm definitely going to relate very hard with it because this is just the tip of the iceberg. There's so much more that I've experienced that yes, I don't get surprised by different type of stories.
I'll be back soon with another episode. Till then, keep listening to me. Keep listening to all the new podcasts that are emerging through the India Project Podcast Lab, sponsored by Anchor by Spotify. And I am pretty sure you won't be disappointed. Till then, thank you. Stay safe. Bye bye.